जय जगन्नाथ वेलकम टू CHSE ओडिया समस्त को आज क्लास को स्वागत। जय जगन्नाथ। I think my voice is audible to all of you. Am I audible? Am I audible properly, dear students? Am I audible? जल्दी जल्दी समस्ते शेयर कर दियो निज निज सांग मान को so that they can avail this class. If you really wish that they should join this class, then you should refer them. Okay. So समझते a chapter DF block, you know that this is coming under group this is new syllabus answer हमारा इटा होची unit number 4. Okay, this is unit number 4. If you find any defects in technical section, you should tell me. ठीक है, so let's start the topic. Again telling you all of you pranam. I thank you for all of your warm wishes. Please share among your friends so that they can also join this class. समस्ते जल्दी जल्दी शेयर कर दियो निज निज क्लास को so that they can also join the class and it would be more benefitable for the students. Okay. I am also sharing again so that maximum to maximum students can join accordingly and they can enjoy the class. Okay. If I say about the mark distribution, mark a chapter around आसीबो पाखापाखि 5 to 10 marks असे and it is under this is your under unit number 4 as per new syllabus. It is unit number 4. Okay, so let's start the class. What is D block element? What do you mean by D block element? I mean we will discuss two chapters under this unit. One is D block element and another is F block element. Yes, Somyo, we will complete all the topic that we had chosen. DF block will be completed by all the live classes in this section. DF block हमारा करा जीवो complete करा जीवो live class रे. हमें daily तो नुह occasionally भला live class रो notification तुमको provide कर दिया जीवो so that you should get connected with our channel and live class पुणी उतरे जेबे हबो we will inform you accordingly. Okay, so let's start the topic. What is D block element? What is transition elements? What do you mean by transition element or D block element? These are also known as D block element or transition element. Why these are named so? Because the electronic configuration comes in the electronic configuration comes in such a manner so that the last electron enters to d orbital. The last electron enters to d orbital. So you can write here that the elements whose valence electron electrons enter the
d orbital, enter the d orbital, are known as d block elements. You should start writing. Pilamane, this is, you should feel that this is just not a simply online class. Your teacher is writing, you should write the classes, and simultaneously you should share among your friends so that they can get benefited from this class. Okay, so why these are known as transition elements? Because these elements are placed in between S block and P block, in between S block and these elements are placed in between S block and P block. These elements are, Soumya, please do not message repeatedly. You are messaging us repeatedly. Please do not message repeatedly. We are trying our best. Okay. So these elements are placed in between S block and P block in the periodic table. So periodic table ro kon roichi na S block और P block. S block roichi तुम्हारा left side रे एवं P block roichi right side रे. आउ ए दीटा मझी रे धंधे की roichi कि D block. So here is your S block, here is your P block. ଆଉ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଧନ୍ଦେ ହେଇକି ରହିଛି ବା ଟ୍ରାନଜିଟ୍ କରୁଛି D block. That's why it is known as your transition elements. Okay. In the periodic table, hence these are known as transition elements. Hence these are known as transition elements. I think no one has any doubt related to the topic why these are known as transition elements and why these are known as D block elements. ठीक अछि. आउ F block elements को हमें कहबा inner transition elements. जेतबेले हमें inner transition elements विषय रे पढिबा when we will discuss about inner transition elements. Next move to the, what are the series? The series, and what is the, how many electrons are there, and what is the elements, and what is the electronic configuration. Very good afternoon to new students. Okay, next series जदि हमें कहवा series रो first अछि हमरो first series जोटा कि हमरो 3D series. This one is 3D series. Yes, Satya, you can enroll in our application. In application all the classes are going. एप्लिकेशन रे हमारो समस्त क्लास चली मेटसाई ओडिया रे. जो माने भी चाहउछंदी से माने जॉइन कर परिबे आउ क्लास निजर पोटेंशियल को इंक्रीज कर परिबे. So you can join with us in our application. Okay. So first series is 3D series, and what are the elements here? The elements are started from scandium,
and its atomic number is 21. Scandium ro atomic number hochi 21 of to zinc its atomic number is 30. ठीक है. anyone who wish to join our course, you can join. Okay, and what is the electronic configuration? Argon 4s1 to 2, 3d 1 to 10. ए भितर क्रोमियम और कॉपर रही इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन एक्सेप्शनल रही. सत्य ऑलरेडी केमिस्ट्री रो जदि हमें कहबा केमिस्ट्री रो बहुत कम केमिस्ट्री चैप्टर सरी तुम सॉल्यूशन सरी फर्दर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चली केमिकल काइनेटिक्स चली एवं डीएफ ब्लॉक ऑलरेडी सरीवा ऊपर डीएफ ब्लॉक आमर एप्लिकेशन रे ता सहित आमर एप्लिकेशन रे केमिस्ट्री सरी हालो अल्केन हालो एरिन्स सहित अल्कोहल फिनोल ईथर चली आल्डेहाइड कीटोन सरी जाई. ओके, नेक्स्ट हम देखिबा सेकंड सीरीज that is known as your 4D series. सेकंड सीरीज को हम कहबा 4D series. 4D series रे एलिमेंट्स कोठो आछि इट्रियम 39 to कैडमियम 40. Sure, your request is acceptable, Barendra and Jagannath. We will try to continue the YouTube classes accordingly, as well as we will share the PYQ class series also. Okay, next, what is the electronic configuration of this series? That is krypton 4d1 to krypton 5s1 to 2, 4d1 to 10. ये बहुत सारा एलिमेंट अच्छी जोटी तुम्हारा से गुड़ाक कौन रोच एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखो. नेक्स्ट वी विल गो फॉर थर्ड सीरीज दैट इज 5D सीरीज. 5D सीरीज आरंभ होइछि तुम्हारा लैंथेनम टू mercury 80 जाए, and its electronic configuration is xenon 6s1 to 2, 4f14, 5d 1 to 10. Next one is fourth series that is known as your 6D series, which is incomplete but ଏବେ complete हो गलानी. And actinium 89 रो start होची. It is starting from actinium. And it is somehow incomplete. एटा incomplete है कि जाइछि. Okay. And what is the electronic configuration? That is radon 7s1 to 2, 6d1 to 10, 7s1 to 2, then 5f14, 6d1 to 10. Okay. This one is incomplete one. Okay, this one is incomplete one. yes पिला माने सार जोटा चैनल रो ओनर हिसाब रे जे चलोचंदी ही इज बसंत सर. ओके, मु टिके नई जाउची सो दैट यू कैन राइट इट. आई थिंक जो माने न लिख पारलो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट आल्सो. ओके, सो ये गला हमर
electronic configuration, about the elements and the all the things. Next we will discuss the general characteristics of transition elements, the general characteristics or physical characteristics, general characteristics or physical characteristics of transition elements, या अंडर आम कौन कौन पढ़ा यहाँ पिला माने गोटे लॉन्ग क्वेश्चन आसीपे इन दिस सेक्शन वी विल डिस्कस डिफरेंट प्रॉपर्टीज फर्स्ट आमर एटॉमिक रेडियस और आयोनिक रेडियस सो एटॉमिक रेडी और आयोनिक रेडी जदि हम देखा ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर केटायनिक इन नेचर सब गुड़ाक केटायन था सो ऑल दीज आर बेसिक रेडिकल as all these are cationic species so these are basic radicals अच्छा atomic radius जदि हम देखा लेफ्ट टू राइट पीरियोडिक टेबल जदि हम मूव करवा when you move in periodic table from left to right what happens to the atomic radius कौन होता है कि कहब when you move from left to right what happens to atomic radius मु कहि देउची जे जदि हमें टॉप टू बॉटम जदि एटॉमिक ऊपर आसीबा ऊपर तलू आसीबा ताले एटॉमिक रेडी कौन हम इंक्रीज हम ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स द एटॉमिक रेडी इंक्रीजेस व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम बट व्हाट हैपेंस टू द एटॉमिक रेडी और द आयोनिक रेडी व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अलोंग द पीरियड एनीवन व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अलोंग द पीरियड द एटॉमिक रेडी वेरी गुड Sriya Gantat, it decreases, the atomic ready decreases, okay. So when we move from left to right along a series the atomic ready decreases. Why it decreases? Because of increase in nuclear charge, so nuclear charge जेहेतु बढ़ी जाए किंतु तार जहाँ साइज रहा कथा नॉर्मल रही कि न्यूक्लियर चार्ज जेहेतु लेफ्ट राइट बढ़ी जाऊँगी सो यार साइज कमी जाऊँगी जो मैंने बुझीपारे से बुझे दूसरी देख आम जदि फॉर एग्जांपल आम जो देखा स्कैंडियम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन ना आर्गन 4s2 3d1 व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ टाइटेनियम आर्गन 4s2 3d1 केवल दीटा एग्जाम 3d2 दीटा एग्जांपल नौ सो ये केतरा सेल अच्छी चार्टा ये भी चार्टा सेल अच्छी सो स्कैंडियम कथा जब हम देखा 4 सेल्स आर देयर इन स्कैंडियम मोर गोल गुड़ा के भल होनी ट्राई टू मैनेज ठीक अच्छे चार्टा अच्छे वेरी गुड तुलसी संगीता श्रिया बहुत सुंदर आंसर ओके बट ये कौन होची ना न्यूक्लियस जदि हम देखा न्यूक्लियस यार केतरा न्यूक्लियस अच्छी यार 21 इलेक्ट्रॉन 21 प्रोटॉन यार 22 इलेक्ट्रॉन 22 प्रोटॉन 22 इलेक्ट्रॉन 22 प्रोटॉन सो ये कौन होची ना 21 इलेक्ट्रॉन और 21 प्रोटॉन और 22 प्रोटॉन स्कैंडियम रे रही 21टा प्रोटॉन आउ टाइटेनियम रे रही 22टा प्रोटॉन तो किए भल टाणिब सेंटर को ये जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को किए भल टाणिब स्कैंडियम ओबियसली भल टाणिब सॉरी टाइटेनियम ओबियसली भल टाणिब कारण टाइटेनियम रो प्रोटॉन संख्या अधिका जेहेतु टाइटेनियम रो प्रोटॉन संख्या अधिका इट विल अट्रैक्ट मोर द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स द न्यूक्लियस दैट्स व्हाई स्क्वीज टा अधिका हबो कोडी टाइटेनियम रे स्कैंडियम रे तो स्क्वीज हबनी
किंतु टाइटानियम रे अधिका स्क्वीज हबारु कौन हम यार साइजटा कमी जीव जहाँद्वारा यार साइजटा जहाँ थिला स्क्वीज हो एभलिया टे कमी जीव मोर चित्र भल हुए पिला माने ट्राई टू मैनेज रुद्र मलिक told that please do G chemistry class. We will try to have the G classes regularly आमे थोड़ा ट्राई करिवु इवनिंग बेसिस रे आमे ट्राई करिवु G क्लास पे थोड़ा केमिस्ट्री G क्लास पे ओके केमिस्ट्री एवं फिजिक्स रो G क्लास पे लाइव क्लास करिया पे आमे ट्राई करिवु और रिकॉर्डेड क्लास पे अकॉर्डिंगली ओके clear. That's why the atomic size decreases when you move from left to right. I think एटा समस्ते बुझी पारथिबो जदि कार डाउट स्टिल थिबो you can ask in our through our telegram और हम एप्लीकेशन रे तुम एनरोल करी पचारि परिबो किंबा टेलीग्राम रे चाहेले भी पचारि परिबो ओके टेलीग्राम रो लिंक ए वीडियो सरला परे हमरो दिया जीवो टेलीग्राम रो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे दिया जीवो सो दैट यू कैन सी द टेलीग्राम link okay next one is further we will go for when we move from top to bottom जेतबेले में top to bottom जाऊ जेमति हमरा स्कैंडियम टाइटानियम स्कैंडियम थिला ता तळगु अछि इट्रियम ता तळगु पुनी अछि तुमरो लांथनम तो सेठी कोन हुए सेठी हमरा एटॉमिक रेडी कम इंक्रीज हुए when we move from top to bottom when we move from top to bottom you can write dear students तुम मैंने चाहिले लिखि परिबो along a groove the atomic or ionic radii increases the atomic or ionic radii increases हमें जानिछे ड्यू टू एडिशन ऑफ नंबर ऑफ सेल्स सो मु एटा लिखुनी ड्यू टू एडिशन ऑफ नंबर ऑफ सेल्स एटी डी ब्लॉक लाइव क्लास हबो कि यस डी ब्लॉक रो सबु सेक्शन डी ब्लॉक पूरा चैप्टर टा हमें लाइव क्लास रे पढिबा श्योर वी विल डिस्कस द टोटल डीएफ ब्लॉक चैप्टर थ्रू लाइव क्लासेस ओके सो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड इफ यू आर न्यू then fast subscribe and get the thumb option as well as so that you can get all the notification in time. Next हम जिबा second property that is ionization energy or ionization enthalpy. What is meant by ionization energy? Ionization energy by ionization enthalpy कोड यूज हुए बा केतेबेला अप्लाई होय किए कहि परिबो आयनाइजेशन एनर्जी कोन बा आयनाइजेशन एंथैल्पी कोन आउ यार वेरिएशन ग्रुप रे केमदि हुए आउ पीरियड रे केमदि हुए ओके न संगीता डेली हबनी एडा ओकेजनली हबो क्लासेस ओकेजनली हबो केबे केमदी सो आयनाइजेशन एनर्जी मींस द अमाउंट ऑफ एनर्जी एबे जाय चार्ट ऑप्शन रे आंसर असलानी सो आई एम राइटिंग डाउन द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द outermost electron the amount of energy required to remove the outermost electron of a neutral gaseous atom outermost electron of a neutral gaseous atom neutral gaseous atom रो outermost electron को हटेवा पई बा बाहर करिया पई हमको जेति की एनर्जी दरकार
that is known as your ionization energy by ionization enthalpy. बहुत सुंदर आंसर ये देइछन्दी तुलसी एवं तुलसी फर्दर सीएस के केम संगीता प्रधान फर्दर श्रिया गंतायत बहुत बढ़िया आंसर देइछन्दी ओके बहुत सुंदर व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम top to bottom along a groove when we move from top to bottom along a groove the ionization energy or ionization enthalpy decreases. Ionization energy decreases due to decrease in atomic size. Atomic size कमी जीवारु एटा कोन एक्सप्लेन करूची जो माने 11th रे पढिनो से मान सो दैट दे कैन अंडरस्टैंड दिस कांसेप्ट कोन कहला ना जदि हमें टॉप टू बॉटम जीवा देखो मु गोटे एटम कहूची एठी मनगर स्कैंडियम कथा कहबी स्कैंडियम रे हमर रहिची चारिटा आउ स्कैंडियम तरल को जोड़ा अछि इट्रियम रे रहिछि पांचटा सेल मैं या पर पेज रे कर दोछि एठी एक्सप्लेन करियो भल लागियो सो 1 2 3 4 5 दिस इज योर इट्रियम एंड दिस इज योर स्कैंडियम. So this one is yttrium. Okay, এটা yttrium টা स्कैंडियम को भलिया ना चारिटा सेल 1 2 3 4 ठीक अछि चारिटा स्कैंडियम रे चारटा रहिछि तो जदि हम देखिबा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को टाणीबा पई बा बाहर करिया पई कोठी बहुत इजी हबो ना जोठी तुमरा कोन थिबो ना इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन भितर लेस अट्रैक्शन थिबो एडी साइज सान थिबारु मोर अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इज more attraction between electron and proton, but here the attraction is less, so less attraction between electron and proton. Electron और proton भितर एठी less attraction थिबो as compared to scandium ताले easy code हबो easy हबो एठी, so easier discharge or easier removal of electron. So this one is easier removal of electron and here is difficult removal of electron. The electron is not the electron is not ejected easily, it is difficult habo, so ithpai ita ionization energy more habo, so more ionization energy, whereas this one is less ionization energy. I think jo mane bhi bujhi parno se mane bujhi jibo. Next, what happens to the ionization energy in a period रे जदि हम देखिबा ionization energy कोन होछि. Ionization energy जदि हम पीरियड रे देखिबा it increases up to manganese जाए manganese पीरियड जाए माने manganese माने को केते नंबर आछि manganese नंबर माने आछि तुमरो थर्ड होछि स्कैंडियम थर्ड होछि स्कैंडियम फोर्थ होछि टाइटेनियम फिफ्थ होछि भानाडियम सिक्स्थ होछि यार गोटे ट्रिक अच्छे स्कूटी भड़ा चोर माने फेरईबार कणानी को जाने ठीक अच्छे. सेवेंथ इज मैंगानीज, एथ पीरियड इज आयरन,
आयरन कोबाल्ट होची 9th पीरियड 10th पीरियड इज निकेल कॉपर इज 11th एंड जिंक इज 12th पीरियड सो आम जो देखा स्कैंडियम रो मैंगानीज जाए जदि जीवा प्रथम आयनेशन एनर्जी फास्ट इंक्रीजेस बट मैंगानीज टू आयरन गला बेले आयनेशन एनर्जी अगेन डिक्रीजेस अगेन आयरन टू जिंक आसला बेले आयनेशन एनर्जी इंक्रीजेस बुझीगला स्कैंडियम सीरीज पर्टिकुलरली जदि मैं कहि स्कैंडियम सीरीज बहुत इंपोर्टेंट कारण ये फास्ट सीरीज सो स्कैंडियम रो जो मैंगानीज जाए मूव करछे व्हेन वी मूव फ्रॉम स्कैंडियम टू मैंगानीज द आयनेशन एनर्जी इंक्रीजेस आयनेशन एनर्जी फास्ट इंक्रीज हो बट मैंगानीज टू आयरन गला बेले आयनेशन एनर्जी डिक्रीज हो कहीं आयनेशन एनर्जी डिक्रीज कहीं फिर पुणी आयरन रो सर जिंक जाए गला बेले इंक्रीज हो कि असंभव कथा आपण कौन गोटे ही कथा कहूँ केतବେଳେ कहते इनक्रीज होची केतବେଳେ कहते डिक्रीज होचनी केतବେଳେ कहूँ आम कि बुझीपारनु अरे बुझाऊँ कौन हो जिनसा ध्यान देखिए शुण स्कैंडियम रो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होची आर्गन 4s2 3d1 स्कैंडियम पर आछि टाइटानियम रो हम आर्गन 4s2 3d2 वानाडियम रो 4s2 3d3 क्रोमियम रो 4s2 3d4 4s1 3d4 5 आ मैंगानीज रो हे जीवो 4s2 3d5 आयरन रो 4s2 3d6 कोबाल्ट रो 4s2 3d7 तुम जो देखो यार 3d सेलटा हाफ फिल्ड अच्छी द डिस ऑफ सेल इज हाफ फिल्ड इन दिस केस कोठी मैंगानीज रे डिस ऑफ सेलटा हाफ फिल्ड अच्छी एवं एस्टा फुल फिल्ड अच्छी मैंगानीज रे जहाँद्वारा क्रोमियम भी हाफ फिल्ड अच्छी बट एज कंपेयर टू क्रोमियम मैंगानीज मोर स्टेबल बिकॉज क्रोमियम रे दीटा हाफ फिल्ड किंतु एठी गोटे हाफ फिल्ड ऑर्बिटल आ गोटे फुल फिल्ड ऑर्बिटल अच्छी 4s ओके तो आम जो ये इनक्रीज करी जाऊे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ी जाऊे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ी गले फर्दर कौन हम अट्रैक्शन बढ़ी जीव अट्रैक्शन बढ़ी गले फर्दर कौन हम आयनेशन एनर्जी इनक्रीज हम ध्यान देकी शुण स्कैंडियम रु टाइटानियम रु वानाडियम रु क्रोमियम रु मैंगानीज मूव कली सो जदि आम कहवा ये मैंगानीज जाए मूव कला बेले कौन हो साइज एमानकर बढ़ी जाऊ कमी जाऊँ सो न्यूक्लियर चार्ज इनक्रीजेस यही डायरेक्शन रे न्यूक्लियर चार्ज कौन हो न्यूक्लियस चार्ज जहाँ रही कारण नंबर ऑफ प्रोटॉन इनक्रीज हेले न्यूक्लियर चार्ज इनक्रीज हम ये डायरेक्शन रे स्कैंडियम टू मैंगानीज ताले फोर्स न्यूक्लियर फोर्स बा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इनक्रीज हम सो हियर कूलम्ब फोर्स इनक्रीजेस कूलम्ब फोर्स मैक्सिमम पिला फिजिक्स रे पढ़ी कूलम्ब फोर्स इनक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अच्छा कूलम्ब फोर्स इनक्रीज हेले फर्दर कौन हम कूलम्ब फोर्स न्यूक्लियर चार्ज बढ़िले कूलम्ब फोर्स बढ़िबो ताले तुम्हारा आयनेशन एनर्जी विल आल्सो इनक्रीज कारण आमको डिफिकल्ट हम इलेक्ट्रॉन बाहर करवा जिते डिफिकल्ट हम से अधिक एनर्जी खर्च करिया पड़ो सपोज गोटे पाठ रही गोटे पाठ इजिली बुझीज आ गोटे पाठ डेरी बुझ जो पाठटा इजिली बुझीज से कौन से जल्दी मन रही जोटा डेरी बुझ से डेरी मन रही अर्थात डेरी मन रहा मैंने तुमको अधिक मुंड खटाइया पड़ो इजिली मन रहा इजिली एक्सेसिबल है मैंने कम मुंड खटाइया पड़ो से भाया अधिका अट्रैक्शन रहा मैंने अधिक एनर्जी खटाइया पड़ो कम अट्रैक्शन रहा मैंने कम एनर्जी खटाइया पड़ो न्यूक्लियर चार्ज मैंने अंशुमान न्यूक्लियर चार्ज मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को आम कह न्यूक्लियर चार्ज ठीक अच्छे किंतु मैंगानीज टू किसी खेल उल्टा हो मैंगानीज टू आयरन आसला बेले उल्टा हो कहीं मैंगानीज ये अच्छी हाफ फिल्ड सो मैंगानीज रो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन रही मन रख कारण हाफ फिल्ड अच्छी सो मैंगानीज रो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन रही किंतु मैंगानीज रो आयरन पाखक आसला बेलू मैंगानीज रो आयरन पाखक आसला बेलू कौन हो
आउ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल नहीं एडी 4:3d6 हे गेला हाफ फील्ड आउ अछि कि हाफ फील्ड तो नहीं ताला एडी स्टेबल नहीं तार अर्थ एडी आमे जदी कहिबा एठी manganese रो आयनेशन एनर्जी मोर हबो एज कंपेयर्ड टू आयरन आयरन रो आयनेशन एनर्जी लेस हबो काहे कि कारण एडी स्टेबल अछि कोठी manganese रे स्टेबल रहिछि manganese स्टेबल थिबारु इलेक्ट्रॉन बाहर करबा एते सहज नाही जनकर मन पूरा स्थिर जने पूरा काम जने सबले योगा करूची जने सबले मेडिटेशन करूची तमे ताकू खराब दिगरे चाहिले भी प्रवर्तै परिबनी कारण ही इज वेरी स्ट्रांग डिटरमाइंड ताकू पढ़ारू केबे भी विरत कर परिबनी बिकॉज ही इज वेरी स्ट्रांग डिटरमाइंड आ जो माने योगा करंतिनी बा किछि मेडिटेशन करंतिनी they can be easily biased if they have not strong determination से भलिया manganese जेतु strong determined बा manganese जेतु stable electronic configuration रहिछि इलेक्ट्रॉन बाहर करबा difficult किंतु iron not so stable electronic configuration so electron बाहर करबा easy हबारु जदी छ एठी iron रे कोन रहछि जदी छ iron रो nuclear charge more बा number of proton more still ionization energy is less it is quite important ei jaga re question asi pare between manganese and iron which has higher ionization energy and why तो जे बेले कहबो जे सर आमे लेफ्ट राइट जदि हम देखिबा न्यूक्लियर चार्ज आयरन रो अधिका 26 टा प्रोटॉन manganese रे 25 टा प्रोटॉन 26 टा प्रोटॉन माने अधिका न्यूक्लियर फोर्स रहबो अधिका न्यूक्लियर फोर्स रहले अधिका हमको अप्लाई करियो पड़ियो कोन आयन बळ इलेक्ट्रॉन बाहर करियो ताले आयनेशन एनर्जी अधिक हबो बट ना आयनेशन एनर्जी manganese रो ही अधिक हबो बिकॉज़ इट हैज स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बुझियला ए जगह रे जदी कार किछि डाउट रहउची प्लीज आस्क मी बिकॉज़ एडा होची गोटे क्रूशियल पार्ट आयनेशन एनर्जी रो एजेंट ठीक ठाक थिला manganese टू आयरन जो चेंज होची एडा बहुत क्रूशियल पार्ट फर्दर जदि हम देखिबा manganese पर हमर नेक्स्ट आछि आयरन पर कोबाल्ट पर निकेल कॉपर जिंक निकेल कॉपर जिंक निकेल रो 4:3d8 कॉपर रो 4:1 3d10 एटा गोटे इलेक्ट्रॉन जंप करिवो पिला माने कॉपर रे आ जिंक रो 4:3d10 ठीक अछि तो ए जो जिंस रहउची एठी एजुजल रहबा आ जिंक रो सबोटा हाईएस्ट हबो जिंक रो माने तमे कहि परिबो 12th number group has the highest 12th number group has the highest ionization energy among the transition elements so transition elements रे सबोटा highest ionization energy जदि कार ताले that is one is zinc that is 12th group clear any doubt related to this concept we will write down next हम ताले लिखि न बाबे so लिखि दवा when we move from left to right when we move from left to right along a period जेते बेला में लेफ्ट टू राइट मूव करिबा the ionization energy increases up to manganese and then decreases up to iron further increases along 3D series एटा केवल 3D series रही 4D 5D रो डिफरेंट रही जोड़ा हमर एते दरकार नहीं केवल 3D series बहुत इंपोर्टेंट रही ठीक अछि आई थिंक समस्त लिखि देथिबो
एबे जाए मात्र 12 स्टूडेंट्स 12 जन ही कौन करचंदी 12 जन ही लाइक देछंदी. इफ यू आर नॉट, if the class is not feeling more effective, then you may leave, and if you feel that it is a quite interesting class, then you can put a thumb up. Okay, and simultaneously please refer your friends to join the class. And further I am saying that if you are interested to purchase our course, you can go through the प्ले स्टोर रे जाइकी सर्च कर परिबो मेट्साई ओडिया, एंड मेट्साई ओडिया रे सर्च करके you can join our free courses, as well as if you want to join our premium courses or paid courses, you can join the paid courses at a very less price. I think the price is 2,200 per total all subject में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आईटी बा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी पे ऑल टोटली पीसीबीआई किंबा पीसीएम पीसी एमआई. ओके, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो आईटी, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आईटी तुम्हें जेकोसी कोर्स जब परचेस कर, इट इज वेरी low, that is 2,200. if you are wishing to purchase, it is up to you. Okay, next हम देखिवा ये गला हमरो काहे के एमती होची. it is because, you can write down, it is because along 3D series the ionization energy increases up to from scandium to manganese and iron to zinc due to increase in nuclear charge, increase in effective nuclear charge. इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़िबार ये बढ़ुची लेफ्ट राइट. but as manganese has the stable electronic configuration, manganese has the stable electronic configuration, as manganese has the stable electronic configuration, so its ionization energy is very high. as compared to जिंक. जिंक तुलन में कंपेयर कला बेले, सॉरी जिंक कहली आयरन, एज कंपेयर टू आयरन, कारण यार स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रही. ठीक है. नेक्स्ट वी विल गो फॉर द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से जिनस हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आम एटलिस्ट ये लॉन्ग क्वेश्चन आज पढ़ीदे. इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, व्हाट इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी? मैं सब क्लास रे कोई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होची बरदान, बरदान सदृश इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सेमती हुए. द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड when an extra electron is added to the when an extra electron is added to the amount of energy released when
an extra electron is added to the outermost shell of a gaseous atom. Outermost shell of a gaseous atom. Released when an extra electron is added to the outermost shell of a gaseous atom is known as electron affinity. Is known as electron affinity. बहुत बढ़िया क्वेश्चन पचार श्रिया गंतायत दैट सर व्हाट इज स्क्रीनिंग इफेक्ट. स्क्रीनिंग इफेक्ट माने स्क्रीन भलिया प्ले करे. स्क्रीन भलिया प्ले कले कौन हुए ना तुम गोटे पर इलेक्ट्रॉन जदि हम देखा स्क्रीन जो माने एसपीडीएफ यही सब विभिन्न प्रकार ऑर्बिटल रही. ऑर्बिटल स्क्रीन रही. तो स्क्रीन जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन टा इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन कम फील करे. दिस इज नोन एज स्क्रीनिंग इफेक्ट. मुझे स्क्रीनिंग इफेक्ट आउ एक्सप्लेन करलिनी. स्क्रीनिंग इफेक्ट एक्सप्लेन करते भी था. स्क्रीनिंग इफेक्ट माने जोटी तुम आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इज फीलिंग लेस अट्रैक्शन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स. इनर इलेक्ट्रॉन रिपल्सन रही. रिपल्सन रही तार गोटे स्क्रीन भाया कम करे. तेणु आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन टा अट्रैक्शन फील कर पारे. सो जो स्क्रीनिंग इफेक्ट जो डिटेल्स आसो से एक्सप्लेन करी. एवं केवल ये कहीदे. And what happens to electron affinity? The electron affinity increases again. The electron affinity increases same. Jemidi ionization energy, same the electron affinity. The electron affinity increases when we move from top to bottom. When we move from top to bottom. along ग्रुप रे जो आम मूव करवा आमको ये ग्रुप ऑफ पीरियड दीट जगह लिखा कहीं आमर जो थिला आगर पी ब्लॉक रे आम केवल ग्रुप लिखुलु पीरियड लिखु नथुलु. इन गोटे ग्रुप ऑफ पीरियड बोथ मेंशन करिया पड़ो बिकॉज आमर डी ब्लॉक रे दीट जगह डिस्कस करा ग्रुप वाइज पढ़ा आम पीरियड वाइज भी पढ़ा. व्हेन वी मूव फ्रॉम left to right, when we move from left to right, along period, when we move from left to right along period रे जो आम मूव करवा the electron affinity कौन हम ना जो तुम ये इनक्रीज हो बट गोटे मिनिट इलेक्ट्रॉन affinity अधिका इलेक्ट्रॉन affinity when we move from left to right from left to right along period the electron affinity decreases. Yes, electron affinity decreases not increases. एटा हमें इंक्रीज पढ़ते ना इंक्रीज पढ़ते माने इट भी इंक्रीज हो नॉट डिक्रीजेस. एटा टिके डाउट रोच. इट विल इंक्रीजेस. इलेक्ट्रॉन affinity will increases. Electron affinity increase hobo and become minimum becomes 0 at manganese and at चारिटा ग्रुप रे 0 हो चारिटा ग्रुप रे कारण से माने इलेक्ट्रॉन नेबेनी सहजरे एट किंतु एमानकर हाई इलेक्ट्रॉन affinity
माने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत ही कम नेगेटिव माने पॉजिटिव टेंडेंसी मानर बहुत सहज रे मानू इलेक्ट्रॉन देई होबनी ए ग्रुप स्टार जाक ए ट्रांजिशन एलिमेंट सहज रे इलेक्ट्रॉन नेबेन तमे केबे देखिछो क्रोमियम माइनस स्कैंडियम माइनस सो हुए नहीं एडा so electron affinity is quite difficult a case and becomes zero at manganese chromium copper zinc generally transition elements have very lower generally transition elements have very lower electron affinity transition element रो electron affinity बहुत ही लो माने नियर बाय पॉजिटिव पळे आसे बेले बेले एते लो जे पॉजिटिव भी आसे कारण इलेक्ट्रॉन एफिनिटी माने एनर्जी रिलीज होला माने नेगेटिव रहबा कथा किंतु बेले बेले पॉजिटिव पळे आसे भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स ठीक अछि सो थर्ड नंबर प्रॉपर्टी इज नॉट सो इंपोर्टेंट नेक्स्ट वी विल मूव टू फोर्थ प्रॉपर्टी दैट इज मेटालिक प्रॉपर्टी मेटालिक प्रॉपर्टी कौन ना आम जाने मेटालिक प्रॉपर्टी डील्स विथ द लस्टर तापर तुम्हारा मेलेबिलिटी डक्टिलिटी सो दीज आर ऑल आर कमिंग अंडर मेटालिक प्रॉपर्टीज माने कंडक्टिविटी सो दीज आर कमिंग अंडर मेटालिक प्रॉपर्टीज किंतु कंडक्टिविटी आमर आगू अच्छी लाइक आम पढ़ा कंडक्टिविटी ठीक अच्छे कंडक्टेंस विषय बट ये आम कंडक्टिविटी एटसेट्रा आम पढ़दे सो मेटालिक प्रॉपर्टी माने कौन कौन डील करिवो मेटालिक प्रॉपर्टी वेरी गुड तुलसी बहुत सुंदर मेटालिक प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट मेटालिक प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट डिनोट्स कौन डिनोट करिवो इट्स स्ट्रेंथ को डिटरमाइन करिवो ठीक अच्छे आउ कौन कौन ना यार मेलिएबिलिटी जोटा को आम कहवा नमनीयता डक्टिलिटी माने तन्यता आउ कौन रही आउ तुम अच्छी लस्चर माने कलर शो करवा आउ कौन प्रॉपर्टी रही शाइनिंग पर मेलेबिलिटी डक्टिलिटी लस्चर कंडक्टिविटी थर्मल कंडक्टिविटी एंड योर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एटसेट्रा ये सब गुण जो गुड़ाक रही से गुड़ाक तुम मेटालिक प्रॉपर्टी रहे व्हाट इज बफर प्लीज एक्सप्लेन एबे बफर आम एक्सप्लेन कर परिबेनी मु केवल गोटे लाइन रे कहि दोछि बफर इज द सॉल्यूशन व्हिच pH does not change with addition of a small amount of acid or base किछि एसिड किमा किछि बेस ऐड करले जार pH चेंज होनी सेटा बफर कह जाए बट आई कैन नॉट एक्सप्लेन इन दिस क्लास बिकॉज इट इज नॉट रिलेटेड टू बफर सॉल्यूशन ओके नेक्स्ट मेटालिक प्रॉपर्टी हम जो देखिबा हाउ इट इज रिलेटेड दैट more the number of valence electrons कारण मेटालिक बॉन्ड का भीतर ही था जानिछो समझते more the number of valence electrons more is the attraction between kernels and free electrons what is kernels what is free electron we will discuss now
कर्नल ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन भितर सो अट्रैक्शन मोर हबो एंड मोर विल बी मोर कौन हम जिते वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़िबो अट्रैक्शन से बढ़िबो कर्नल ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन भितर आउ से अनुसार कौन हम मोर विल बी द स्ट्रेंथ ऑफ द मेटल सो मेटल रो स्ट्रेंथ से कौन हम अधिक हम बा मेटालिक प्रॉपर्टी से अधिक हम बा मोर विल बी द मेटालिक प्रॉपर्टी स्ट्रेंथ लिखि देवानी मोर विल बी द मेटालिक प्रॉपर्टी स्ट्रेंथ से गोटे कथा ही मोर विल बी द स्ट्रेंथ ऑफ द मेटल और मोर विल बी द मेटालिक प्रॉपर्टी से अनुसार मेटल प्रॉपर्टी मोर हो व्हाट इज कर्नल्स डू यू नो व्हाट इज कर्नल कर्नल माने युद्ध जो माने करते युद्ध सी जो आमर मेटल्स गुड़ाक था से ये फॉर्मेट रे था कैटायन सॉरी दिस वन इज योर न्यूक्लियस एज वेल एज माने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को छाड़देले पूरा पार्टटा एंड दिस वन इज इलेक्ट्रॉन ये इलेक्ट्रॉन गुड़ाक अरेंज होगी था जो आम कि फोर्स अप्लाई करूँ बा किसी हीट दो बा किसी इलेक्ट्रिसिटी दो कौन हम ना गोटे ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन पूरा डिस्प्लेस करिवो ये एठी जीव पुणी ये एठी जीव पुणी ये बाहर को पळेबो ये पुणी बाहर को पळेबो जद्वारा एमानक भितर को भलिया फॉर्मेट आसीबो प्लस 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 दिस प्लस मीन्स दिस आर नॉट न्यूक्लियस ओनली प्लस माने गोटे इलेक्ट्रॉन छाड़देले वैलेंस इलेक्ट्रॉन को छाड़देले बाकी बड़का पार्ट को ये प्लस नहीं माने तार अर्थ ये प्लस भितर इलेक्ट्रॉन अच्छी प्रोटॉन भी अच्छी सो ये इलेक्ट्रॉन पड़ेगा ये इलेक्ट्रॉन यूजुअल रहा इलेक्ट्रॉन 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 एंड ये इलेक्ट्रॉन 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 फर्दर ये इलेक्ट्रॉन 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 सो यू विल फाइंड ए सी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हियर एटा कोडी ना से मेटल क्रिस्टल भितर जो मेटल रही मेटल भितर ही एमती हुई ठीक अच्छे एक्साइट हो इलेक्ट्रॉन आउ ये तुम्हें कौन हम सब पाठ तुम माने ये कौन गोटे सब पाठ सदी पाठ सरीवा चक्कर में पढ़ाएनि आई एम टीचिंग यू टू टीच द कंटेंट नॉट टू कवर द कंटेंट मु कवर करवा सेकेंडरी पार्ट आमर किंतु पाठ पढ़ा सारिबा सेकेंडरी पार्ट पाठ को पढ़ा बुझा एंजॉय करवा प्राइमरी पार्ट आम पढ़ार आउ गोटे कथा जे सब पढ़ा फोकस कर तुम्हें पढ़ा उपर घरे फोकस कर कौन सी प्रॉब्लम हो लाइक पाठ पढ़ारे तो तुम्हें चाहूच जे ना मु ऑनलाइन क्लास जॉइन कले भल होता कौन सी गोटे नहीं जाती ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन देन यू कैन चूज आवर सब्सक्रिप्शन मेट्स ओडिया सब्सक्रिप्शन रही तुम्हें से ऑनलाइन क्लास जॉइन कर आ सब्सक्रिप्शन रे तुम्हें मोर कोड भी यूज कर माय कोड इज PCP10 कोड यूज कले 10% डिस्काउंट पाइबो ऑन एवरी परचेज ओके हो पढ़ा सो दिस इज नोन एज कर्नल्स एंड these are known as free electrons clear free electrons and kernels Medsa Odia is trying its best to give you the qualitative classes as soon as possible as well as it is providing the weekly exams weekly exam भी हमें दो ता सहित तुम्हारा डाउट क्लियरिंग सेशन भी रुहे यदि कहार डाउट रुहे एवं टेलीग्राम चैनल एक्टिव थाए नोट प्रोवाइड करो एटसेट्रा बहुत सारा जिनस रही मुझे एक्सप्लेन करनी पाठ पर फोकस करी सो कर्नल्स फ्री इलेक्ट्रॉन सो देयर इज अट्रैक्शन बिटवीन कर्नल एंड फ्री इलेक्ट्रॉन कर्नल और फ्री इलेक्ट्रॉन भीतर अट्रैक्शन रोची सो ड्यू टू दिस अट्रैक्शन बिटवीन कर्नल एंड फ्री इलेक्ट्रॉन देयर इज ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन which denotes the metallic property. So हम जब देखिबा एमानकर मेटालिक प्रॉपर्टी बहुत अधिका
So आम कहीपर इन ट्रांजिशन एलिमेंट्स जनरली 2 electrons are available. So for interaction with other atoms or the metallic bond formation, again greater the number of unpaired electron, greater is the strength of the metallic bond. So I got a point that greater is the number of unpaired electron. जते unpaired electron रहिबो greater is the metallic property. So এটা डिपेंड करछि जे अनपेड इलेक्ट्रॉन कोठी रहुछि, कोठी अनपेड इलेक्ट्रॉन कम रहुछि, कोठी ए ऊपर डिपेंड करछि. सो एटा हमें ट्रेंड वाइज कहि परिबनी ग्रुप रे बा पीरियड रे किमदी मेटालिक प्रॉपर्टी वेरी करछि. बट स्टिल वी कैन हैव ए वन नोट दैट व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, the metallic property decreases. And when we move from top to bottom, the metallic property increases. पिलाने मु से जाई पढ़ेबी जो पर्यंत मोर फेस लॉक न हो जाय. फेस लॉक हो गेले मु पढ़ेबी नाही. ठीक अछि. नेक्स्ट टाइम देखिबा डेंसिटी. 4 नंबर पॉइंट गला. नेक्स्ट टाइम पढ़िबा 5 नंबर. 5 नंबर आछि डेंसिटी. हां आ गोटे एठी कहि देबी मु metal with highest melting metal with liquids behavior at room temperature is mercury. Then metal with highest melting point is melting point or boiling point is tungsten or wolfram, which are coming under these transition elements. ठीक है. and metal with highest density आछि osmium. highest conductivity, highest thermal conductivity, metal with highest thermal conductivity is कोटा तुम्हारा इलेक्ट्रिकल डा सिल्वर, थर्मल डा होची इलेक्ट्रिकल डा सिल्वर, थर्मल डा कॉपर, मेटल विथ हाईएस्ट थर्मल कंडक्टिविटी. इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मोर मन अच्छी सिल्वर.
आउटा बोधे कपर मोर मन पड़ने हाइस्ट तुम्हें यहाँ चेक करके लिखिदेव इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटीज और सिल्वर सो आई ऑल्सो नीड टू लीव द क्लास मत भी क्लास सारिबार अच्छी बहुत समय है पढ़ार तापरे नेक्स्ट हम देखा डेंसिटी मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट जोड़ाक आम आसंदा क्लास गुड़ाक पढ़ा डेंसिटी मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ता सहित आम पढ़ा अन्य प्रॉपर्टी लाइक वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर्मेशन ऑफ कलर बहुत इंपोर्टेंट फॉर्मेशन ऑफ कलर आउ तुम कैटालिक एक्टिविटी फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स देन पैरामैग्नेटिज्म फेरोमैग्नेटिज्म जोटा कि हमारा मैग्नेटिक बिहेवियर ठीक अच्छे एलॉय फॉर्मेशन यही सब आउ कि आमर नेक्स्ट क्लास में देखा आउ गोटे क्लास लगे ये प्रॉपर्टी को पूरा सारे तापर आम पोटासियम डाइक्रोमेट गोटे क्लास पोटासियम परमैंगनेट दुईटा क्लास सरले आमर चैप्टर सरज डी ब्लॉक छोटिया चैप्टर किंतु आमको टाइम लगे ओके थैंक यू फॉर जॉइनिंग द सेशन थैंक यू ऑल ऑफ यू थैंक यू and again I'm telling keep watching our classes if you wish to join our classes next class टा केबे हबो सेटा तुमको जणी दिया जिवो टेलीग्राम रे आ तुमको यूट्यूब रे जणी दिया जिवो सो यूट्यूब सहित हमर टिके कनेक्टेड थाओ नेक्स्ट क्लास केबे हबो क्वाइ जिवो ठीक अछि।